Hello students, welcome back to MKH video series. My name is Aditya and in the previous video we have successfully completed exercise 13.3 up to question number 2nd, right? So I hope you have understood the examples and the questions of exercise 13.3 that have been told in the previous video. Now remember, we have to simply apply on the formulas of the curved surface area of a cone and the total surface area of cone in this exercise. And also one more relation, that is slant height square is equal to sum of the square of this radius and height, right? So L square is equal to R square plus H square, right? So using these formulas you will get the result of every equation based on this exercise, right? So let us now move into this exercise further. So this time you can see equation number 3rd is what we are going to start from. So यहाँ पे equation number 3rd में क्या given है? The curved surface area of a cone is 308 centimeter square. So अब question में हमें curved surface area जो है already given है. So let me first write what the given in the question, right? So given क्या है हमारे पास? The curved surface area of cone, right? And that is 308 centimeters square, right? Also you can see the slant height is given, that is L, which is 14 centimeters, right? So आप देख सकते हैं हमें फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट क्या करना है, that the radius of the base. So यहाँ पे अगर आप रफली ड्रॉ कीजिए एक कॉन, so you can see हमें यहाँ पे रेडियस जो है वो फाइंड आउट करनी है, and this slant height is 14 centimeter. And let me just tell you, the curved surface area of cone is already given to us, right? So यहाँ पे start करते हैं. You can see for the first part, so यहाँ पे क्या आएगा आपको पता है, the curved surface area of cone was already given to us. So let me just start from here. So अब curved surface area of cone निकालने का फॉर्मूला क्या है अगर मैं देखूं, that is pi r l. So अगर मैं इसके नीचे फॉर्मूला लिख देता हूं pi r l. Now curved surface area already given है, so pi r l equal to क्या हो गया 308, क्योंकि ये हमें already given है. Now pi की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 22/7 इनटू रेडियस जो है हमें फाइंड आउट करनी है फर्स्ट पार्ट में, आप देख सकते हैं. सो एज इट इज रख दीजिए. देन स्लैंट हाइट L जो है आपको गिवन है 14 इक्वल टू 308, राइट? नाउ फर्दर इफ आई जस्ट सॉल्व दिस, सो आप इसमें 7 1 7 7 2 14, राइट? सो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में 22 इंटू 2 कितना हो गया 44 मल्टीप्लाई बाय R एज इट इज इक्वल टू 308. नाउ ये 44 मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड में कहा जाएगा डिवाइड में, सो R की वैल्यू क्या आ जाएगी 308/44, राइट? नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज सिंपली रिड्यूस इट. सो आपको मैं बता देता हूं 44 के टेबल में 7 पे चेक करता हूं. सो 7 4 जा 28, 2 कैरी, 7 4 जा 28, 29 30. सो आप देख सकते हैं 7 के टेबल पे, सॉरी 44 के टेबल में 7 पे जा रहा है 308. सो 44 1 जा 44, 44 7 जा 308. यू कैन सी चेक, राइट? सो रेडियस कितनी आ गई आपके पास 7 centimeter, and this is, you can see what we have to find out in the first part here. So that is done. Quite easy. Just you have to simply apply on the formula of curved surface area of a cone, that is pi r l, and equal to 308, that is already given the curved surface area of cone, right? And then you have to simplify it, you will get the radius, right? Quite easy. Now let us move on directly to the second part. अब हमें second part में क्या find out करना है, the total surface area of this cone. So if you just look at the formula here, so pi r l plus r. So what is required here? Radius and slant height, right? And both we know here, right? So simply what you have to do is substitute that into that, right? So यहाँ पे अगर मैं question को rub कर दूं, and let me just move on. So now you can see in the second part, total surface area of cone we know is pi r l plus r, right? So let me just substitute the values here. So सबसे पहले पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 मल्टीप्लाई r. व्हाट इज रेडियस जो हमने फाइंड आउट की फर्स्ट पार्ट में, दैट इज 7. नाउ दिस इज इन मल्टीप्लाई. सो व्हाट इज स्लैंट हाइट L, दैट इज 14 प्लस r रेडियस वी हैव ऑलरेडी गॉट 7. सो लेट मी जस्ट सॉल्व दिस. सो आप देख सकते हैं ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 1 7. सो ओनली रिमेनिंग इज 22 मल्टीप्लाई. नाउ लेट मी जस्ट ऐड देम, 14 plus 7, so that will be 21. So you have to simply multiply, you can see these two. So 22 into 21. Let me just check out. So that will be 22, then 2 to the 4, 2 to the 4. So 2 6 4, right?
So there will be 462 centimeters square, right? So this is going to be, you can see the total surface area of this cone here, right? And this is what we have to find out in the second part of this question. Quite easy, just you have to apply on the formula. Remember this. So that was all in this question here. So students, let us move on to the next question now. So this time, question number 4 is given to us as a conical tent is 10 meter high and the radius of its base is 24 meter, right? So यहाँ पे एक cone की shape में एक tent है, a conical tent. So let me just draw a tent first like this, right? So this is a conical tent on the ground, right? So यहाँ पे आपको दे रखा है the height of this tent is simply 10 meters, right? And further you can see the radius of its base is also given as 24 meters, right? So यहाँ पे already radius given है and the height of this tent as 10 meters, right? So this is the height. Now we have to find out first part that the slant height of the tent, right? So we know that this is the slant height and this is what we have to find out. Now if you remember the relation here that L square is equal to R square plus H square. So अगर यहाँ पे मैंने आपको बताया था तीनों में से कोई एक चीज मिसिंग है, so we can just simply find out by substituting the other two things, right? So यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे रेडियस और हाइट जो है वो पता है, so रेडियस और हाइट मैं यहाँ रख दूंगा तो slant height can be calculated, right? So let us move on with the solution of the first part. So we know, you can see that L square is equal to R square plus H square, right? So सबसे पहले यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं. So यहाँ पे हमें पता है that L square जो हमें कैलकुलेट करना है, so leave it as it is. अब रेडियस जो है हमें ऑलरेडी गिवन है, that is 24, right? So that will be R square, that means 24 square plus H square. So height भी हमें पता है, you can see that is 10 meters, so 10 square. Now further you can see L square will be equal to 24 square. So 24 का square क्या होता है? 24 into 24, that is 576, right? Plus 10 का square क्या होता है? 10 into 10, that will be 100. So यहाँ पे 576 plus 100 total will be 676. So that is L square, right? अब next step में मैं क्या करूंगा? ये square हटा दूंगा, तो right hand side पे क्या हो जाएगा? Square root. So 676 हो गया. Now let me just tell you 676 का square root जो होता है that is 26, because 26 into 26 जो होता है वो क्या होता है? 676. So the square root of 676 is 26. So that will be the slant height of this conical tent, right? So ये हमें find out करनी थी first part में, and this is 26 meters, right? Now let me just move on to the second part of this question, right? Now you can see we have to find out the cost of canvas required to make the tent. Now let me just tell you that the canvas is the cloth by which we will make this tent. So आप ध्यान से देखिए तो cloth कहाँ लगेगा? सिर्फ outer curved surface area के ऊपर, right? So सिर्फ curved surface area के ऊपर ही conical tent का canvas required होगा, right? So अगर यहाँ पे हमें कितना canvas लगा है, सबसे पहले ये निकालना होगा, और एक्चुअल में हमें यहाँ पे क्या करना है? कॉस्ट ऑफ कैनवस निकालनी है कि कितने खर्चा होगा कैनवस का, you can see, to make the tent if the cost of 1 meter square. So suppose कीजिए इतना सा एरिया जो कैनवस का कपड़ा है वो कितने का है? 1 मीटर स्क्वायर का चार्ज कितना है? ₹70, राइट? सो टोटल अगर मैं कर्व सरफेस एरिया निकाल लूं और उसको 70 रुपीज से मल्टीप्लाई कर दूं, so that will be the total cost of the canvas required for the tent, right? So हमें सिंपली क्या करना है? कर्व सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है, उतना ही कैनवस की रिक्वायरमेंट है, और हमें पता है 1 मीटर स्क्वायर कैनवस जो है वो कितने रुपीज का? 70 का. सो टोटल कर्व सरफेस एरिया को मैं 70 से मल्टीप्लाई करूंगा एंड यू विल गेट द कॉस्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड, राइट? सो लेट अस डू द सेम हियर. सो आई एम गोइंग टू इरेज दिस. So you can see the solution of second part now. So यहाँ पे total, the curved surface area, right? So curved surface area of cone. Now you know that the canvas area of canvas, you can write that better, right? So area of canvas is equal to the curved surface area of cone, right? Because हमें पता है कि curved surface area के ऊपर ही सिर्फ canvas लगेगा, right? So that will be, you can see, pi r l. हमें पता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? दैट इज पाई आर एल. सो यहाँ पे यू कैन सी पाई की वैल्यू कितनी होगी? 22/7. देन रेडियस यू कैन सी दैट इज 24 into the slant height L, that is 26. Now let me just check out, is something reducing? No.
So let me just simply multiply them. So यहाँ पे सबसे पहले 22 को 24 से multiply करना पड़ेगा. So 22 4 जा 88, then 22 2 जा 44, right? So 8, then 8 and 4 12, that will be 5. So 22 into 24 कितना हुआ आपके पास? 528. Now into 26, right? So let me just solve this. So 6 8 ja 48, 4 carry, 6 2 ja 12, 13 14 15 16, 1 carry, 6 5 ja 30 plus 1 31. Now 2 8 ja 16, 1 carry, then 2 ja 4 plus 1 5, then 2 5 ja 10. Now let me just add them. So 6 and 6 is 12. So 5 6 7, 3 as it is, then 1. So आपके पास कितना आ गया? 13728 divide by 7, right? So now we have to perform the division here. So if I just divide this, you can see, let me just expand this. So 13728 divided by 7. So 7 1 ja 7. There will be 6 remaining, then a 7 down. So 7 9 ja 63, right? So subtracting it will give you 4. Then 2 down, so 7 6 ja 42, then you can see 8 down, then let me just check out. So decimal and a 0, right? No, sorry, you can see it is going at the table of 1. So 7 1 ja 7, 1, then a decimal and then a 0. So 7 1 ja 7, then minus, there will be 3, then a 0. Let me just start it from here. So 7, you can see 7 2 ja 14, 7 3 21, 7 4 ja 28. So 2 down. So this will move on further. So if I just take up to 2 decimal digits, so that is 1961.14, right? And in meters square, right? So ये आया आपके पास curved surface area of this cone, right? Now हमें पता है कि 1 meter square canvas का charge जो है वो कितना है? 70 rupees, and this is also the total area of the canvas required, which is the curved surface area. So directly मैं इसको multiply करने वाला हूँ. That is what we have to do here. So if I just rub this, so this implies, you can see the cost of 1 meter square canvas is given to us as, you can see, 70 rupees, right? So cost of, you can see the total area of canvas required, that is 1961.14 meter square canvas, will be 70 into 1961.14, right? So simply आपको ये multiply करना है. So let me just now remove the decimal. That will give you 2 zeros. So 1 0 से 1 0 cancel out. So 1 0 बच जाएगी denominator में. And 7 into 196114. So 196114 into 7. So 7 4 is 28. 2 carry. 7 1 is 7 and 1 2 9. 7 1 is 1 7. Then 7 6 is 42. 4 carry. 7 9 is 63 and 4 67. 6 carry, 7 into 7 and 6 13, right? So there will be 1372798. So this में 1 0 है तो एक digit से पहले decimal. So what it will be is 1372798 rupees, right? So this is going to be the cost of the canvas required to make the tent here, right? So that was all in this question here. So students, let us move on to the next question now. So this time question number 5th is given to us as that what length of a tarpaulin 3 meter wide will be required to make conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter. So यहाँ पे question में आपको क्या given है? एक tarpaulin cloth है आपके पास जिसकी width यानी कि breadth जो है वो given है 3 meter breadth है, right? So अगर मैं यहाँ पे एक cloth बना लेता हूँ rectangular tarpaulin cloth, right? So ये एक tarpaulin cloth है आपके पास, right? Now इसकी जो breadth है that is given here 3 meter, right? So this is the breadth. Now the length is required. So कितने length का ये tarpaulin cloth होना चाहिए ताकि हमारे पास एक conical you can see tent बन सके इसी से, so that its height is you can see 8 meters and the base radius is 6 meters, right? So आपको क्वेश्चन समझ में आ गया? Quite easy. Just हमें यहाँ पे इस कितने लेंथ का tarpaulin cloth होना चाहिए जिसकी width हमें given है cloth की that is 3 meter, ताकि जिससे एक conical tent बन सके जिसकी height तो 8 meter हो और base radius 6 meters, right? Now
let me just read further that assume that the extra length of material that will be required for stitching margins and wastage in cutting is approximately 20 centimeter. So आप देख सकते हैं इस क्लोथ से जब हम एक टेंट बनाएंगे तो इसमें से कुछ क्लोथ वेस्ट भी हो जाएगा, राइट, फॉर कटिंग यू कैन सी, एंड देन स्टिचिंग के लिए भी रिक्वायर्ड होगा. सो जितना भी वो स्टिचिंग और कटिंग के लिए जो एक्स्ट्रा वेस्टेज हुआ है, यू कैन सी ऑफ द क्लोथ, यू कैन सी दैट इज 20 सेंटीमीटर, राइट. सो अब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो ब्रेड थी इस क्लोथ की दैट वाज इन मीटर्स. देन यू कैन सी जो टेंट बना इसकी हाइट और रेडियस भी किसमें है, मीटर्स में. बट यहाँ पे ये जो वेस्टेज और कटिंग के अंदर जो स्टिचिंग मार्जिन थे वो जो आपको क्लोथ की यू कैन सी डायमेंशन गिवन है दैट इज इन सेंटीमीटर. तो पहले इसको किसमें कन्वर्ट करना होगा, मीटर में, बिकॉज सभी बाकी चीजें किसमें है, मीटर में. सो दैट इज द अदर थिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे क्या करना है, इसकी लेंथ निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले इस कॉनिकल टेंट की बात करते हैं. सो ये कॉनिकल टेंट का जो भी कर्व्ड सरफेस एरिया होगा that will be the required cloth of terraplane, right. So पहले मैं वो निकालता हूं the curved surface area of this cone, right, because that is going to be the area of terraplane cloth required, right, to make the tent. So let us start this solution here. So सबसे पहले यहाँ पे हमें given है that the height is 8 meters and you can see the base radius is 6 meters, right. So we know that you can say the curved surface area of cone is equal to pi r l, right. So pi is, you can see यहाँ पे given है हमें कितना यूज करना है, 3.14, right, into radius you can see that is 6 and the you can see slant height, right. So यहाँ पे हमें slant height नहीं पता, right. So पहले वो हमें निकालनी होगी. So इससे पहले भी जो मुझे स्टेप करना है, I am going to apply on this here, right. So यहाँ पे मुझे पता है L square क्या होता है, R square plus H square. So यहाँ पे रेडियस मुझे पता है 6 and the height is 8. So if I just solve this, so 36, 6 6 is 36 and 8 8 is 64. So यहाँ पे आपके पास L square कितना आ गया, इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 100. So square root of 100 is 10 centimeter, right. So यहाँ से आपको पहला first step start करना होगा, right. Then you have to move on to this, right. So अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो slant height है वो मैंने कितनी निकाल ली, 10. So that is 10. Now you have to simply solve this. So you can see अगर मैं यहाँ पे 3.14 को 6 से मल्टीप्लाई करूं, so 3.14 into 6, so 4 6 is 24 and 2 carry, then 6 1 is 6 and 2 8, then 6 3 is 18, right. So आपके पास कितना है, 18.84 into 10. So आप इसलिए जब आप इस डेसिमल को रिमूव करेंगे so 100 आएगा, so एक जीरो कैंसिल आउट होगी, so that will be 1884 upon 10. So अब एक जीरो तो एक डेसिमल आ जाएगी, so 188.4 meter square, right. So this is going to be the curved surface area of the cone. और जितना curved surface area of cone है उतना ही cloth यहाँ पे required था, right. So let me just rub the question here for some space. So this implies, so cloth, or you can say the terraplane. Let me just correct the spell. So terraplane cloth required to make the tent is, you can see, 188.4 meter square, right. So यहाँ पे जितना कर्व सरफेस एरिया उतना ही क्लोथ रिक्वायर्ड होगा. नाउ वन मोर थिंग कि यहाँ पे हमें लेंथ निकालनी थी सबसे पहली चीज. सो हमें पता है कि जो जितनी इस टेराप्लेन क्लॉथ की एरिया होगी उतना ही टेंट है. सो अगर मैं बात करूं कि टेराप्लेन क्लॉथ रिक्वायर्ड है, दैट इज ऑल्सो यू कैन राइट एज the area of terraplane let me just correct the spell, terraplane sheet, right. So ये that is equal to 188.4, right. So अब area of ये rectangular जो terraplane cloth की sheet है इसका क्या होगा, length into breadth. So यहाँ पे हमें breadth given था, हमें length निकालनी थी. So पहले मैं एरिया का फॉर्मूला लिखता हूं, that is length into breadth, that is equal to 188.4. Now further आपको पता है यहाँ पे breadth given है, that is 3. So length as it is equal to 188.4. अब 3 मल्टीप्लाई में कहां जाएगा, डिवाइड में. So length will be 188.4 divided by 3. So इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे.
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 6 जा 18, देन फर्दर 3 2 जा 6, कितने बचे? 2 बच गए। डेसिमल एज इट इज नाउ 24 हो गया, सो 3 8 जा 24, सो आपके पास कितनी आ गई लेंथ? 62.8। सो जो ये टेरापोलिन क्लॉथ की लेंथ होगी वो कितनी होगी? 62.8 मीटर्स, राइट। सो आप देख सकते हैं पहले मैंने क्या किया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल टेंट निकाला, जितना कर्व्ड सरफेस एरिया होगा उतना ही क्लॉथ रिक्वायर्ड है, और क्लॉथ का एरिया आप देख सकते हैं यानी कि एरिया ऑफ टेरापोलिन शीट, जो कि लेंथ इनटू ब्रेड से निकलेगा। तो यहाँ पे ब्रेड गिवन थी एंड एरिया मैंने कॉनिकल टेंट का और इसका सेम ही है, सो इक्वेट कर दिया। सो दैट विल बी गिविंग अस द लेंथ रिक्वायर्ड बाय डिवाइडिंग इट बाय ब्रेड, दैट इज 3। सो यहाँ पे 62.8 meters is going to be the length of this terrapolin cloth which was required, right? अब also आपको ये भी given था कि 20 सेंटीमीटर जो है वो कटिंग और स्टिचिंग मार्जिन में वेस्ट भी होगा क्लोथ, राइट? So that was in centimeters. So let me just rub this, and now let me just tell you. Now you can see हमें पता है the cloth, you can see used in stitching margin, cloth wasted, right? So let me just write that. So cloth wasted in stitching margin, and you can see cutting is 20 centimeter. Now मुझे पता है सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, by dividing it by 100. So ये कितना आ जाएगा? 1 0 से 1 0 कैंसिल, so 1 0 यानी एक डिजिट से पहले डेसिमल, so 0.2 मीटर्स, राइट? तो अगर 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? 0.2 मीटर्स, राइट? सो ये क्लॉथ भी इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा लेंथ में, उतना रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि स्टिचिंग मार्जिन के लिए जो क्लॉथ चाहिए वो भी इस शीट में ही होना चाहिए। तो इसकी लेंथ कितनी थी? तो टोटल लेंथ ऑफ, लेट मी जस्ट करेक्ट दैट, सो टेरापोलिन sheet is, you can see 62.8 plus 0.2. So अगर इसको मैं ऐड करता हूं, so 62.8 plus 0.2, so 0 8 plus 2 10, 2 plus 1 3 and 6, so 63 you can see meters of length is the total length required here now, right? So आप देख सकते हैं ये जो 0.2 meters का एक्स्ट्रा स्टिचिंग मार्जिन और कटिंग में वेस्ट होगा क्लॉथ, वो भी आपको लेंथ में ऐड करना पड़ेगा। So this is going to be the total length of terrapolin required to make this conical tent, right? So quite a lengthy question, but if you just stick to the basics and the formula, you will get the result. So that was all in this question here.